Welcome to all of you in this session of General Science lecture number 1। आज हम इस लेक्चर में एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। एनर्जी क्या चीज़ है। आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक जनरल साइंस में है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब जिसने सिलेबस फ्रेम किया होगा उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि कैंडिडेट्स को पता है कि एनर्जी क्या चीज़ है। इसलिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे एनर्जी के बारे में और मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस कर लेंगे और आगे के लेक्चर्स में सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी देख लेंगे। एनर्जी, इट रिफर्स टू द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। क्या है एनर्जी? हाँ, यह ताकत का नाम है जिससे कोई काम किया जा सके। किसी चीज को हरकत में लाने के लिए, मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। गर्मी के लिए एनर्जी की जरूरत है। इसकी स्ट्रेंथ हम महसूस कर सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं होते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मीनिंग इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। अगर उसको डायरेक्शन भी होता तो then it was magnitude, it was vector quantity. In simple terms, energy is the ability of a system to perform tasks or make things happen. Remember this thing, energy is the ability of a system to perform tasks or make things happen. There are various forms of energy and they can be broadly categorized into two main types, that is potential energy and kinetic energy. अगर हम देख लेंगे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं और ये सब फॉर्म्स हम मेनली टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। broadly categorized into two main types, that is potential energy and kinetic energy. अब देखते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है क्या चीज़। पोटेंशियल एनर्जी ये वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ में होती है, स्टोर होती है और इसकी चीज़ की बनावट और उस चीज़ की बनावट यानी ये चीज़ किस मटेरियल से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, या इस चीज़ की हालत यानी ये चीज़ कितनी पुरानी है या कितनी नई है, कितना इस्तेमाल हुआ है, और इस चीज़ की पोजीशन एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यह होती है पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की। काइनेटिक एनर्जी क्या है? देखो, this is the energy of motion. An object that is moving has kinetic energy. The amount of kinetic energy depends on the mass of the object and its velocity. ये एनर्जी तब पैदा होती है जब कोई चीज़ हरकत करता है। कोई भी चीज़ जो मूव होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ये एनर्जी कितनी है इस चीज़ या ऑब्जेक्ट में, ये उस चीज़ की मास यानी वजन और उसकी वेलोसिटी यानी ये चीज़ किस रफ्तार से चलती है। Two things determine the kinetic energy of any object, that is the mass of the object and its velocity. Remember these things. What is potential energy? This is stored energy. Potential energy is stored energy that an object possesses due to its position, condition or composition. Please note down these notes on your notebook. Types of kinetic energy: translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy. Translational kinetic energy. It is the most common form of kinetic energy associated with the linear motion of an object. Translational kinetic energy is associated with the linear motion of an object.
Example, a moving car has translational kinetic energy. क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो हरकत यानी मोशन से पैदा होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ये लाइनियर मोशन से पैदा होती है। लाइनियर मोशन क्या है? यस, वी कैन से एन ऑब्जेक्ट इज इन लाइनियर मोशन when it is moving in straight lines. So we can say a moving car in a straight line on a straight road has translational kinetic energy. Rotational kinetic energy. This type of energy is associated with the rotation of an object around an axis. Example, the spinning blades of a wind turbine have rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तब पैदा होती है जब कोई चीज अपनी सेंटर के इर्द गिर्द घूमती है। एग्जाम्पल, स्पैनिंग ब्लेड्स ऑफ ए विंड टर्बाइन retain rotational kinetic energy when they spin around their axes. Vibrational kinetic energy. It is related to the vibrational motion of particles within a system. It is related to the vibrational motion of particles within a system. Example, the motion of molecules in a heated gas represents vibrational kinetic energy. जब किसी चीज को गर्मी दी जाती है, लाइक जब गैस को हीट दी जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में विब्रेशन पैदा हो जाती है। उस विब्रेशन की वजह से उसमें विब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। Fourth one, nuclear potential energy, and fifth one is electrostatic potential energy. Gravitational potential energy. This form of potential energy is associated with an object's position in a gravitational field. Example, a book on a shelf has gravitational potential energy relative to the ground. क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? देखो, ये वो एनर्जी है जो जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स से पैदा हो जाती है। A book on a shelf has gravitational potential energy or not? Yes, it has potential energy. Here, the potential energy is a result of its elevated position on the shelf within the Earth's gravitational field. So we can say a book on a shelf has gravitational potential energy relative to the ground. Second is elastic potential energy. It is related to the deformation of an elastic object such as a spring when it is stretched or compressed. You know it very well. जब किसी इलास्टिक चीज को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप में तब्दीली आ जाती है। उसकी वजह से वहां एनर्जी पैदा होती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। Examples, compressing a spring stores elastic potential energy. Chemical potential energy. This is the potential energy stored in the chemical bonds between atoms and molecules.
between atoms and molecules. Chemical bonds stored in the chemical bonds between atoms and molecules, or between atoms of molecules. It may be, this energy may be in the chemical bonds between the atoms or between the atoms and molecules. Example, the energy stored in the bonds of gasoline is released during combustion. क्या है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के केमिकल बॉन्ड्स और एटम्स में स्टोर होती है। जैसे पेट्रोल या गैसोलीन को जब हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो इस में जो एनर्जी स्टोर होती है इस पेट्रोल या गैसोलीन में, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन ये गैसोलीन इस्तेमाल होने पर इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देती है। कौन? कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जब गैसोलीन या पेट्रोल यूज होता है, ऑन द कंबुशन इट गेट्स चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, potential energy to kinetic energy. Nuclear potential energy. It is associated with the potential energy stored in the nucleus of an atom. कहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. Example, the energy released in nuclear fission or fusion reactions is a form of nuclear potential energy. Two types of reactions are there: nuclear fission or nuclear fusion. These reactions release nuclear potential energy, or we are calling it nuclear energy. It is stored in the nucleus of an atom. ये एनर्जी एटम्स के न्यूक्लियस में होती है और ये एनर्जी दो तरह रिलीज हो जाती है, एक न्यूक्लियर फिशन से और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. This type of potential energy arises from the interaction of charged particles. Interaction of charged particles. जब charged particles में आपस में interact होता है। Example, the potential energy of a charged particle in an electric field. कोई charged particle जब electric field में होता है, उस पर जो energy पैदा होती है वो क्या होती है? Potential energy. कौन सी potential energy? Electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. This was all about kinetic energy and potential energy. Let us see an important note about conservation of energy. The law of conservation of energy states that energy cannot be created or destroyed. It can only be converted from one form to another. This means that the total energy of a closed system remains constant over time. Energy cannot be created nor destroyed. ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो क्या होता है एक्चुअली? इट कैन only be converted from one form to another. Kinetic to mechanical energy, or mechanical to potential, potential to kinetic, electrical to mechanical. Only it can be converted from one form to another, but it cannot be created or destroyed. ये कौन कहता है? The law of conservation of energy. तो इस चीज को आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देख लेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs।
What is the fundamental concept of energy in physics? The weight of anything, the capacity to do work, the magnitude of direction, the velocity of an object. एनर्जी के मुताबिक फिजिक्स में एनर्जी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इन फिजिक्स? फिजिक्स एनर्जी के बारे में क्या कहता है? एनर्जी क्या चीज़ है? द वेट ऑफ एनीथिंग, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज द राइट आंसर. According to passage, which form of energy is associated with the linear motion of an object? जो आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है उसके जो आपने अभी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके मुताबिक इनमें से लाइनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन से है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, विब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Linear motion, it is translational kinetic energy. Which type of potential energy is related to the deformation of an elastic object? Gravitational potential energy, chemical potential energy, nuclear potential energy, elastic potential energy. Clearly it is elastic potential energy. According to the law of conservation of energy, what happens to the total energy of a closed system over time? It decreases? No. It increases? No. It remains constant? Yes, it remains constant. What is the example of electrostatic potential energy given in the passage? The motion of molecules in heated gas, the potential energy of a charged particle in an electric field, compressing a spring, the spinning blades of a wind turbine. The potential energy of a charged particle in an electric field is the right answer. So it was all about today's lecture. Thank you very much. Stay blessed. Please subscribe this channel. Thank you once again.